Okay. So good morning everyone. Welcome back to Crack Grade B. मेरा नाम है ऋषभ. And let's begin today's class for Economics and Finance News and Analysis. यही बोलते थे ना पहले. Okay. Good morning Gaurav. Good morning Nivedita. Good morning Isha. Let's start the class. So number one about quantum mission. ठीक है. Quantum mission के बारे में. What is quantum mission? उसको जानने के लिए you can watch Ant-Man and the Quantum Mania or Avengers Endgame. Okay, so you don't need to know what is quantum computing or quantum mission. ठीक है, it's basically study of subatomic particle. ये physics का part था. Now it is also used in information technology to develop better crypto access. ठीक है, better cyber security etc. तो उसके लिए 6,000 crore has been given by the government. ठीक है, so the Union Cabinet approved National Quantum Mission with a total outlay of rupees 6,000 crore with period 2024 financial year to 2031 financial year. ठीक है. To scale up research and development and create an innovative ecosystem in quantum technology. That's all you have to know for a phase 1 mark question. 6,000 crore रुपए दिए गवर्नमेंट ने for national quantum mission that will be implemented by Department of Science and Technology. ये दो चीज याद रखनी है बस. 6,000 crore for national quantum mission that will be implemented by Department of Science and Technology. That's all you have to remember for the exam. 1 marker. ठीक है. फिजिक्स का एग्जाम नहीं है, कोई जेई एग्जाम नहीं है. Quantum mechanics will be asked. Okay. Now, initially it was introduced in the budget of 2020, and the government said that we will give 8,000 crore for it. But उस समय कोविड आ गया, सब गड़बड़ हो गया वहां पे. So it was then postponed और finally ये financial year 24 budget से launch हुआ है and 6,000 crore is the total outlay. Now remember this point also very important. There were only 6 nations before India that have developed their own research and development capabilities for quantum computing. सिर्फ 6 nation है. India is the seventh. India is also the seventh largest nation in the world. ऐसे भी relate करके याद कर सकते हो. ठीक है, तो seventh nation in the world that has a quantum computing research and development. So who are the first ones? First six: the US, China, Finland, Austria, not Australia, Austria, France, and Canada. These were the top six countries, the first 6 countries for developing this for research and development for quantum computing. Okay. Now over the next 3 years, around 2,000 kilometers of multi-node quantum network will be established, and it will generate around $300 billion worth of industry output. ठीक है, industry output of around $300 billion by 2030, जब तक ये मिशन चलेगा फाइनेंशियल ईयर 2031 तक. ओके, सो याद करने की चीज क्या? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. when it will start financial year 24, when it will end financial year 31. And out, what is the outlay? 6,000 crore. India is the seventh country, and 2,000 kilometers in the first 3 years. The quantum network will be developed. If it is asked as a 1 mark in phase 1. Now, important UN Nation Population Fund report. Let's read about. अब ये इंडिया चाइना का कंपैरिजन है, but this report is much more intense about the world population, कैसे चल रही है population. About that we will also discuss that. पहले ये देख लेते हैं कि इंडिया चाइना का कंपैरिजन क्या हो रहा है. So India is set to become क्या बनी गया है. India has become the most populous country, but let's say set to become the most populous country in the world with 1.429 billion people by the middle of 2023, said a report by UN Population Fund. ठीक है, और इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट. स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट. ओके. नाउ it is released by the UN Population Fund. ठीक है, State of the World Population Report released by UN Population Fund. It has said that by middle of 2023, India will be the most populous country.
It has also said that Asian nations have accounted for more than a third of global population growth in the last 70 years. Means जो global population growth रही है उसमें वन थर्ड जो contribution रहा है it is of Asian nation. Asian nation means Southeast, South Asia and Central Asia mostly. Okay, now China, obviously China stands ahead of India in most social as well as economic parameters. China की per capita income India से 5 times है. The per capita income of China is 5 times that of India. The life expectancy at birth is also higher in China. We will see it. But India has what? A demographic dividend. अब demographic dividend क्या होता है? Demographic dividend is a term that defines the people who are more people are in working age than the passive age. ठीक है, डिपेंडेंट एज क्या होती है? 15 ईयर से पहले, 65 ईयर्स के बाद. वर्किंग एज इज 15 to 65 ईयर. ठीक है, सो मोर वर्किंग एज पॉपुलेशन इज देयर इन इंडिया देन द डिपेंडेंट पॉपुलेशन, सो वी हैव अ डेमोग्राफिक डिविडेंड. इसमें भी more than close to 50% of the population is below age of 25. ठीक है, तो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है. Now let's see the comparison. Life expectancy at birth. ठीक है, life expectancy at birth. So blue is India, red is China. तो इंडिया में मेल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 71, फॉर फीमेल इट इज 74. इन चाइना इट इज 76 एंड 82 रिस्पेक्टिवली. सो ऑब्वियसली चाइना में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बेटर है, बट हमको चाइना का याद नहीं रखना है. वी हैव टू रिमेंबर इंडिया स्पेसिफिक. तो 71 इन मेल एंड 74 इन फीमेल. ग्लोबल अगर देखेंगे, ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल सिनेरियो में भी द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फॉर मेल्स इज 71. ठीक है, globally also it is 71, but globally for females it is 76. Globally for female life expectancy at birth is 76. So India का नंबर याद रखना है, global का नंबर याद रखना है. That's it. Okay, now so GDP. So China's GDP you can see is 6 times. Per capita income is obviously 5 times as per IMF projections. ठीक है, now age 10 to 24 years, percentage 26% in India. ठीक है, अब 18% है चाइना में. मीन्स आवर वर्किंग पॉपुलेशन विल इंक्रीज इन द कमिंग 5 to 10 years. ओके, ऑल्सो ये जो एज है 10 to 24 years ऑफ एज, ग्लोबली इट इज, ग्लोबली इट इज 24%. ग्लोबली इट इज 24%. Sorry, yes, 24% and 26% in India. 65% और older. ग्लोबली 10% पॉपुलेशन है, इंडिया में 7% पॉपुलेशन है. 65% और 65 ईयर्स और ओल्डर. ठीक है, ओके. नाउ TFR. So total fertility rate of India has fallen below 2.1, which is a good thing. 2.1 का fertility rate क्या होता है? रिप्लेसमेंट लेवल fertility rate. मीन्स हम दो, हमारे दो वाला जो फॉर्मूला है, that is replacement rate, that is TFR of 2.1 or below, means you are going to have a declining population in coming 60-70 years. ठीक, okay. Now India is at a unique historical opportunity to convert potential demographic dividend into economic benefit through additional investment in health sector, education sector, quality jobs for young people, etc. But ये बातें हम लोग पिछले 10 साल से सुन रहे हैं, that we have a demographic dividend, we just have to tap that demographic dividend. But the situation is way more complex. ठीक है, जॉब की सिचुएशन बहुत खराब है. Private sector jobs are not growing, and in this era, means these years, layoffs are happening, no new jobs are happening. Even the companies who have signed people for on campus recruits, they are slashing the salaries. So yeah, job scenario is grim. So it's not as easy as like कि चुटकी बजाए and we can tap our demographic dividend. Though we have a demographic dividend कि हमारी working age population बहुत ज़्यादा है, but still our opportunities are not that much. So India should invest more in social creating opportunities. Okay.
Now let's see some numbers. So name of the report is obviously State of the World Population. State of the World Population, ठीक है। और इसमें वही है 15 to 64 years means working population age is 65% in the world, ठीक। 10 to 24 is 24%, 65 and above is 10%, ठीक है। सबसे important data for the world, it is for the world, okay। Now currently most populous region is Southeast Asia. Currently most populous is Southeast Asia. Southeast and East Asia means China and countries on the east of India, ठीक है। अंडमान निकोबार से ईस्ट जो कंट्रीज है वो मोस्ट पॉपुलस है। बट बाय 2037 it will be South Asia means the Indian subcontinent region and Central Asia like Saudi Arabia, etc. So Central and South Asia will be most populous by 2037 because the indicators, life indicators will improve at that time, ठीक है। Now some more metrics. Global TFR globally. TFR globally is 2.1% for two-thirds of the region. This means more than 66% of the region, global region, geographical region has a TFR below 2.1, except some nations like Pakistan or sub-Saharan countries, etc. But still टू-थर्ड यानी 66% से ज्यादा रीजन है जहां पे टीएफआर एक रिप्लेसमेंट लेवल पे है या उससे कम है, एट 2.1 और बिलो। ऑल्सो rise in population since 2019 is continually declining. तो अभी पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी चल रही है, अराउंड 1% पर ईयर, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, इंडिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ओके। नाउ highest number of immigrants means the people, the net outflow of people from one country to outside. So highest immigrant population means population going out of the country for work opportunities, education, etc. So highest immigration population is our neighbor पाकिस्तान, ठीक है। सबसे ज्यादा इमिग्रेटिंग पॉपुलेशन है पाकिस्तान, रिमेंबर दिस, नॉट इंडिया, नॉट दिस टाइम। इंडिया सेकंड बट सबसे ज्यादा इमिग्रेशन होता है पाकिस्तान से, मतलब देश छोड़ के जाने वाले लोग, ओके। सो दीज आर सम फैक्ट्स यू शुड रिमेंबर फ्रॉम द वर्ल्ड, एंड बाकी तो इंडिया का दिया हुआ है। नाउ इंडिया रिटेन्स थर्ड स्पॉट इन एज यूनिकॉर्न हब हुरू। अब ये देखो बहुत सारी रिपोर्ट आती हैं, प्राइवेट रिपोर्ट्स ऑन स्टार्टअप्स। वी हैव सीन वन रिपोर्ट वेयर इट हैज, we have seen that 11 startups have started in 2022 in China and 23 startups in India, more than double, ठीक है। तो वो भी एक रिपोर्ट थी, but this report is one report. It has said that India is the third spot in the country with highest number of unicorns. कितने unicorns है इंडिया में, 68 new unicorns are there in India. There are 68 new unicorns in India as against 666 in US and 316 in China, ठीक है। चाइना में यहाँ पे भी है, चाइना में 316 है, यूएस में 666 है, इंडिया में है 68। इंडिया इज थर्ड, फोर्थ इज यूके एंड देन जर्मनी,
ठीक है। ऑल्सो एडिशन कितना हुआ है, एडिशन सिंस पेंडेमिक 14 न्यू स्टार्टअप्स हैव बीन एडेड सिंस पेंडेमिक। अब यूनिकॉर्न क्या होता है, यूनिकॉर्न मींस $1 billion और मोर वैल्यूएशन स्टार्टअप्स, ठीक है। द स्टार्टअप्स दैट आर वैल्यूड more than $1 billion, इट इज अ यूनिकॉर्न, ठीक है। तो ये हुआ है इंडिया में 14 न्यू यूनिकॉर्न्स पोस्ट पेंडेमिक, ठीक है। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस, इंडिया थर्ड पे है, टॉप पे यूएस है, फिर चाइना, फिर इंडिया। पोस्ट पेंडेमिक 14 हुए हैं, टोटल 68 है, ठीक है। किसी और रिपोर्ट में होगा तो 100th यूनिकॉर्न, 101st यूनिकॉर्न, ऐसे भी हो जाता है। तो इट चेंजेस रिपोर्ट टू रिपोर्ट। ये हुरून रिपोर्ट, वन मार्कर क्वेश्चन इन फेज वन, फेज टू में नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ फाइनेंस मिनिस्टर टू वर्ल्ड बैंक सजेस्ट मॉडल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ओके, अब ये बातें क्यों हो रही, बिकॉज द गवर्नमेंट करेंटली इज सीकिंग टू इन्वेस्ट मोर इन इंफ्रास्ट्रक्चर। वी हैव सीन इट, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने 33% बढ़ाया भी है बजट में, ठीक है, अराउंड 10 ट्रिलियन रुपीज। बट इवन दैट इज नॉट इनफ। वी वांट प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ठीक है। फाइनेंस करना है किसको किसको, रेलवे, रोडवेज। तो हम लोग और क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो $10 billion किया, उसके अलावा क्या कर रहे हैं। सो देर इज अ स्कीम कॉल नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ठीक है, $6 ट्रिलियन फीस वाली, 2000 कब तक चलेगी, 2026। ओके, also we are doing national infrastructure pipeline to develop logistics and etc with public private partnerships, state partnership, ठीक है। Now, and also we are releasing REITs, invites, etc. ठीक है, infrastructure investment trust bonds, ये सब। But even after doing all this, the overall commitment of the private sector is not that much. Private sector is not much keen to invest in the infrastructure development or asset monetization in India. Why? Because the return on investment is low, and also because the regulations of government are too much, ठीक है, बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट का रेगुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से देर इज अ लखनऊ दिल्ली तेजस दैट रन्स बिटवीन लखनऊ एंड दिल्ली, ठीक है। दिस दैट इज अ प्राइवेट ऑपरेटेड ट्रेन, प्राइवेटली ऑपरेटेड ट्रेन, ठीक है। आईआरसीटीसी चलाता है, एक तरह से इंडियन रेलवे के अंडर में नहीं होती है वो। दे प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा सर्विसेज एक्सेट्रा, तो उसको टाइम पे चलना है, ये वो, लेट होगा तो दे विल गिव यू सम कंपनसेशन। दैट दैट ट्रेन गोज almost empty every day, ठीक है, or every second day. Why? Because the fares are dynamic, higher, and also since the train takes same amount of time as a Shatabdi takes, or as any other train takes to and fro from New Delhi to Lucknow. So why will people pay more to go on a train अगर उनका समय भी नहीं बच रहा। समय क्यों नहीं बच सकता, बिकॉज देयर आर ऑलरेडी ट्रेन्स रनिंग ऑन दैट ट्रैक between, let's say, Lucknow and Delhi. So there is no extra incentive for the private sector to run a train where they cannot provide anything extra, ठीक है। अब जैसे वंदे भारत है, वंदे भारत भी उसी स्पीड पे चलती है जैसे शताब्दी चलती है मोस्टली, ठीक है। 15 मिनट 20 मिनट जल्दी पहुंचा देती है कहीं अगर जाना होगा, दैट्स ऑल। तो इट कैन रन एट अ हायर पेस, but since our infrastructure is not that developed, we do not have that type of tracks. अगर tracks हैं भी तो we do not have that fencing around the track. So because there is always a fear that a cow might hit Vande Bharat, and since Vande Bharat is basically not that, मतलब वो, that is a fiber kind of body due to aerodynamics, so that it can run fast, but it is not running faster. Why? Because there is lack of infrastructure around the tracks. There is always a fear a cow will hit, an animal will hit, and the train will stop, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारा अभी रुका हुआ है। वाई? बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज नॉट वेरी की। इनवाइट्स है, राइट्स है, ये सब जो है, दे आर नॉट गिविंग एज मच रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर एज दे वांट, ठीक है। 7.5%, 7.1%, इवन आफ्टर दैट इट विल बी टैक्स, कोई फायदा नहीं दिखता लोगों को। So that's why finance ministry wants World Bank to study and develop a report and give it by to the finance ministry of India, so that finance ministry can take up some decisions how to involve private player more, ठीक है, and increase the investment in infrastructure. तो यही है पूरी कहानी, so let's see it.
So World Bank is expected to submit detailed reports on how the center can attract more private investment into the sectors. कौन से sectors? Railways, roadways, urban infra and power sector. The lagging behind sectors. ठीक है? Railway, roadway, power and urban infrastructure. ठीक है? In budget also, the finance minister has said that the infrastructure finance secretariat will assist all stakeholders in attracting more private investment in infrastructure. ठीक है? So here the World Bank will deep dive into each of these sectors, and meanwhile we are also engaging with line ministries. The reports will be submitted to us from May, and the bank will suggest innovative financing structures to attract more private investors. ठीक है? In multiple specific reports, the World Bank is expected to lay down suggestions on developing holistic ecosystem for infrastructure financing, life cycle approach, innovative financing structure, sector specific. Basically, different method of financing will be suggested by World Bank, and whatever is suitable for the Indian condition, Finance Ministry can take forward that to basically to increase the private investment. ठीक है? फोर सेक्टर्स कौन से? वही है, एनर्जी, पावर, रोड्स, रेलवेज एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है वो देख लेते हैं. So energy sector faces high financial deficit at power distribution companies. Yeah, discoms. Discoms are always in losses in India. No matter which government is there, उदय स्कीम आ गई, सारी स्कीम आ गई, but still the discoms are in losses. ठीक है, traditional losses, historical losses. Roads and highways challenges include ambitious targets of long gestation periods. Ambitious target क्या? जैसे 12,000 किलोमीटर की रोड हमें बनानी है. हाईवेज, ठीक है, ये टारगेट होता है. वी वर नॉट एबल टू अचीव इट इन फाइनेंशियल ईयर 22, 23. कंटिन्यूअसली वी आर नॉट अचीविंग इट. ठीक है, तो एम्बिशियस टारगेट बना लेते हैं. एंड रोड डेवलपमेंट इज अ 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर लॉन्ग टर्म टारगेट. ठीक है, बिफोर बिफोर दैट हाईवे स्टार्ट्स टू गिव यू एनी रिटर्न्स थ्रू टोल टैक्सेस एटसेट्रा. ठीक है, तो जेस्टेशन पीरियड हायर होता है. देयर आर लीगेसी इश्यूज ड्यू टू अर्लियर स्ट्रेस एसेट रिगार्डिंग रोड्स एंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. Now, urban infrastructure suffers from low or non-sustainable pricing of services, driven by political consideration, negligible private sector participation, mainly due to viability issues. ठीक है, and poor capacity at urban local audit. For example, let's say waste management systems. They are very bad. Even in big cities like Delhi, it is bad. In cities like Lucknow, it is not very good developed. कभी कभी मान लो 6 महीने के लिए for 6 months a contract is given to a private player, and when the contract expires no one is there. ठीक है, then people are forced to give their trash to any private, let's say कचरा वाला. ठीक है, that's why, that is the issue. Railway, it faces issues like limited internal resources to finance capital and revenue expenditure, cross subsidizing passenger fare. Cross subsidizing क्या? Because generally passenger fares in India are subsidized up to 40%. आपके टिकट पे लिखा भी हुआ होता है. And how it is cross subsidized? Because so to let's say offset the subsidy of passenger trains, what railways do is they have to take higher freight charges. अब फ्राइट चार्जेस या गुड्स ट्रेन का चार्ज हाई करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कम हो जाता है. तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विथ रोड सेक्टर और अ ट्रक falls down. Why? Because आप ट्रक या रोड सेक्टर से पॉइंट टू पॉइंट अपना सामान भेज सकते हो. बट फॉर रेलवेज यू विल हैव टू फर्स्ट take your goods to a railway yard. You will have to load it. That will go to a certain place or a yard. That will unload there. और वहां से फिर ट्रक में भर के ले जाना पड़ता है. So overall cost, because we are cross subsidizing of the goods train, increases. So competitive advantage is lost to the railways. ठीक है. So cross subsidizing passenger fare through freight tariff and an institutional structure which is hindrance to catalyzing private capital. Why? अब जैसे we were going to, जैसे अभी हबीबगंज है भोपाल में स्टेशन, द फर्स्ट प्राइवेट स्टेशन, रानी कमलापति नाम हो गया जिसका. एक स्टेशन बना है. ठीक है, पिछले 6 साल से बताया जा रहा है कि वी विल प्राइवेट मोनेटाइज आवर एसेट्स एंड वी विल रीडेवलप स्टेशंस विद प्राइवेट सेक्टर्स. एंड ठीक है, even New Delhi railway station development was going to be done with private sector, but private sectors do not want to work with the government because of too much regulation.
ठीक है, इवन फॉर अहमदाबाद दे हैव पुल बैक देयर हैंड। अब जैसे अभी आया है इन द करेंट बजट, अराउंड 1200 1300 स्टेशन शुड बी अपग्रेडेड, और बिना प्राइवेट सेक्टर के वो हो नहीं सकता। ठीक है, कि रेलवे खुद जाए सारा काम करे, ऐसा नहीं हो सकता, प्राइवेट सेक्टर शुड बी इन्वॉल्व, बट प्राइवेट sector is not keen. So how to attract private sector should will be a study by the World Bank. Okay, for financial year 24, budget capex target is 10 trillion rupees compared to 7.3 trillion of financial year 23, a jump of around 37. ठीक है, 1.3 trillion interest free 50-year interest free loan to states. ओके, तो वही कहानी है वर्ल्ड बैंक की, कि रिपोर्ट बनाएगा फॉर अट्रैक्टिंग मोर प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। नाउ विंडफॉल टैक्सेस ऑन क्रूड ऑयल रिटर्न, बिकॉज अब विंडफॉल टैक्स लगता क्यों है? व्हेन अ सर्टेन कंपनी हैज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स विदाउट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, देन इट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, कुछ कुछ काम एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ रहा है, यू आर गेनिंग प्रॉफिट्स विदाउट डूइंग एनीथिंग। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, जहां आपको 5% प्रॉफिट होना था, आज आपको 25% हो रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस गोइंग हायर। ओके, सो ऑन दो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स विंडफॉल टैक्स इज पुट अपॉन, विंडफॉल टैक्स लगता है उसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट के ऊपर, सो दैट टू मच प्रॉफिटेरिंग ना कर पाए कोई भी कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशन और फर्म। ओके, so windfall tax was gone for let's say 1 month, only 1 or 2 months, एक महीने ही हुए थे इसको गए हुए, but since again अब हुआ क्या? OPEC plus the country that determines what will be supply of crude oil in the world, they have said that we will reduce the supply of crude oil in the world market. अब सप्लाई कम होती है तो क्या होता है? प्राइस बढ़ते हैं, सो क्रूड ऑयल प्राइसेस राइजिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट। सो ये विंडफॉल टैक्स है क्रूड ऑयल पे, ये सिर्फ डोमेस्टिक क्रूड ऑयल के ऊपर विंडफॉल टैक्स लगेगा। डोमेस्टिकली सोर्स क्रूड ऑयल पे ये विंडफॉल टैक्स लगेगा, बिकॉज इफ द कंपनी विल एक्सपोर्ट इट एट एन इंटरनेशनल रेट, ठीक है, even if they are going to sell to a petrol refinery company, for example crude oil निकाल रही है ONGC for example, and it is selling to let's say Indian Oil Corporation, ठीक है, तो सेल हो रहा है किस किस रेट पे? एट द इंटरनेशनल रेट, एंड द डोमेस्टिक रेट्स आर लोअर, सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर गेनिंग सुपरनैचुरल प्रॉफिट। सुपरनैचुरल प्रॉफिट हो रहा है तो क्या लग रहा है? विंडफॉल टैक्स लग रहा है, दैट द गवर्नमेंट डज नॉट वांट कि कोई भी कमाए हमारे अलावा। Okay. So Central Board of Indirect Taxes and Customs so has reintroduced windfall tax on crude oil, domestic crude oil, remember it, a fortnight after bringing it down to zero. So new tax rate will be, windfall tax will be 6,500 a ton. Sorry, 6,400 a ton. Don't remember it. फिर 15-20 दिन के बाद फिर खत्म हो जाएगा ये. Just remember what is windfall tax, or tax on super normal profits. ठीक है, the tax is meant to mop up some of the super profits that producers make during global price surge, is revised on a fortnightly basis. ठीक है, rest everything is not important for you, don't go up to it. ठीक है, what are the reason? The reimposition of windfall tax because there is a surge in global crude oil prices. Why? Because OPEC Plus has said that they will cut upon supplies. Reduction in supply means higher prices. Inflation बढ़ेगा, price rise होगा, तो profit ज़्यादा होगा for those company who are doing crude oil business. Okay, now NHAI plans for a 10,000 kilometer of digital highway. 10,000 किलोमीटर ऑफ डिजिटल हाईवे। अब डिजिटल हाईवे क्या है? 10,000 किलोमीटर क्या है? दिस मीन्स फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क या ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क विल बी लेड डाउन फॉर 10,000 किलोमीटर ऑन द हाईवे। वाई? टू सपोर्ट 5G 6G एटसेट्रा। उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर लाइंस बिछाई जाएंगी 10,000 किलोमीटर की बाई फाइनेंशियल ईयर 25, मतलब 2 साल में 10,000 किलोमीटर। ठीक है, so Ministry of Road Transport and Highways has announced the plans for NHAI to develop 10,000 kilometers of optical fiber network infrastructure across country by financial year 25.
ठीक है. The fully owned NHAI special purpose vehicle, that is National Highway Logistic Management Limited, will execute digital highway. National Highway Logistic Management Limited will execute digital highway network and lay down 10,000 kilometer optical fiber cable. Why? To improve and advance for the deployment and advancement of 5G and 6G technology in India. ठीक है. तो पायलट प्रोजेक्ट क्या है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अराउंड 1400 kilometers and Hyderabad Bangalore corridor around 512 kilometers will be the pilot project of NHAI for digital highway. 10,000 किलोमीटर में से अराउंड 2000 किलोमीटर का या 1800 किलोमीटर का, सॉरी 1900 किलोमीटर का एक पायलट प्रोजेक्ट होगा. 1400 किलोमीटर फॉर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे जो नया वाला बन रहा है, एंड 512 किलोमीटर फॉर हैदराबाद बैंगलोर हाईवे. Okay. The OFC network aims to bring internet connectivity to remote locations and accelerate the deployment of advanced telecom technologies like 5G and 6G. Okay, simple, no rocket science. Now, a simple news of RBI meeting. तो एक मीटिंग हो रही है आरबीआई की, वेयर ऑल द बोर्ड्स, बैंक बोर्ड्स मीन्स नॉट बैंक बोर्ड ब्यूरो, मीन्स सारे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, ठीक है, foreign banks, every bank board of directors are coming together. RBI has called a meeting. That's why. Why this meeting? Because RBI will discuss anything related to governance, ethics, and role of the board and supervisory expectations. ठीक है. Issues related to governance, ethics, role of boards, and supervisory expectations of banks, of banking in 21st century kind of thing. ठीक है. हमें अपनी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके ऊपर एक मीटिंग होने वाली है. ठीक है. होगी, जो आएगा देखा जाएगा. Now details are simple. So RBI governor, deputy governors, EDs of the RBI and Department of Supervision, Department of Regulation and Enforcement Department, ये first of a kind interaction है. Also, it is significant because Finance Minister in the budget of financial year 24 has also said that we need to improve governance and investor protection in the banking sector. Okay, we need to increase the governance and investor protection in the banking sector because we have seen banking sector deteriorating in West. ठीक है. तो इसीलिए थोड़ा और we have to be more vigilant towards our banking sector and improve the corporate governance. वैसे जैसे वर्क करते हैं बैंक, उसको इम्प्रूव करना ज्यादा जरूरी है. Okay. Also, Finance Minister has proposed certain amendments to Reserve Bank of India Act 1934, Banking Regulation Act 49, Banking Companies Act 1970. You need to remember all that. Also, discussion paper on governance in commercial banks in India will be discussed in this meeting. अभी discussion paper on governance in commercial banks in India, उसकी salient, what were the salient points? We will discuss it. Not very important, but you can use it if a question comes about corporate governance in banks in India. If a suggestion is asked, ठीक है, तो इस पेपर का सजेशन यूज कर सकते हो उस आंसर को लिखने में. कैन बी यूज. ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर वाज टू align the current regulatory framework with the global best practices. ठीक है. Just wait. Okay. Now it will be better. Okay. So what is the discussion? The objective of the paper is to align the current regulatory framework
with global best practices while being mindful of the context of the Indian financial system. What were some of the objectives? Let's see it. तो ये है ऑब्जेक्टिव. जस्ट यूज इट फॉर अ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. अच्छा फॉर्डर मटेरियल है ये. Empowering bank boards to set up culture and values in the organization. Recognize and manage conflict of interest in the board members. Okay. For example, जैसे वीडियोकॉन केस ना हो जाए आईसीआईसीआई बैंक के तरह. Because the chairman of ICICI Bank had some conflict of interest with giving loans to Videocon, because Videocon was funding her own husband's company. That's why, like that. ठीक है. Set the appetite for risk and manage risk within the appetite. ठीक है. Risk management basically. Improve supervisory oversight of senior management. Strengthen the assurance function through various interventions. Achieve clear division of responsibility. Clear division of responsibility between board and the management. ठीक है. बोर्ड और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिवीजन होना, जैसे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिवीजन होना चाहिए, जो कि होता नहीं है जनरली. तो वो डिवीजन होना चाहिए. ठीक है. मैनेजमेंट एंड बोर्ड. टू इनकरेज द सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, सेम एज द लास्ट पॉइंट. ठीक है. ओनरशिप यानी बोर्ड या प्रमोटर्स और मैनेजमेंट में एक सेपरेशन होना चाहिए. ठीक है. डिसीजन मेकिंग शुड बी बेस्ड ऑन डेटा एनालिटिक्स रादर देन द whims of the ownership. Okay. So these were some salient points for to improve the corporate governance in the banking sector. ठीक है. So that's it for today. We will go on to MCQs, easy MCQs again. Okay, let's do it. Just wait. So question number 1. Question number 1. What is the National Quantum Mission approved by the Union Cabinet of India? What is the National Quantum Mission approved by the Union Cabinet of India? Easy question. Correct. Isha, Nivedita, Gaurav, right. A mission to develop and research innovation for quantum technology. Just wait. ठीक है. 6,000 crore up to financial year 31. Department of Science and Technology. Just remember it. Financial year. Okay. Question number 2. Easy question. Question number 2. According to UN Population Fund, which country is set to become the most populous nation in the world by the mid of 2023? आसान क्वेश्चन नहीं देना चाहिए. Okay, सही जवाब. ईशा, गौरव, निवेदिता, right answer. B is the correct answer. India going to surpass China. Okay, how many unicorns did India add since the pandemic began? According to the Hurun report. So it's A or it's 14? A है या 14 है? Okay, correct ईशा. वैसे गौरव right, निवेदिता correct. It's D, 14. Okay. Now again question number 4.
What is the reason behind the reintroduction of windfall tax on crude by the CBIC? Yes, Isha, yes, 68 are total. Correct, Gaurav, correct, Isha. To mop up some super profits that producers make during global price surges. सही है, because windfall means supernormal profit. To tax the supernormal profit, that means windfall tax. Okay, now last question. Okay, what is the National Highway Authority of India planning to develop by fiscal year 2024 and 25? Easy. What is the NHAI of India planning to develop by fiscal year 2024-25? C. Why will NHAI develop railways in India? So NHAI is planning this 10,000 kilometer of optic fiber infrastructure across country. ठीक है? Uh, that is digital highway. Correct, Gaurav. Isha, Nivedita, yes, correct. It's a digital highway. 10,000 kilometer of digital highway. ये है NHAI. Mission of NHAI. Okay, that's it for today. Thank you for joining everyone. ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग एवरीवन। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आज के लेक्चर से आपके नॉलेज में वैल्यू ऐड हुआ है तो डू लाइक एंड शेयर। आज के लेक्चर में रिपोर्ट है यूएन फंड पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट, डू रीड इट एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय। ईद मुबारक। भाई की मूवी मत देखना। बाय।